see double diamonds, Shivram and Anjali Kumar. All right, great. Okay. So, like when we did the welcome message, how Kanti said, be in the room, I have a confession to make. The first function I came to, I couldn't really be in the room because I couldn't pay attention to. I couldn't sit in one place for that long. It's one of the reasons I went diamond. Financial freedom was more secondary to that. I couldn't sit in one place and write notes for 2 days. You know what I'm saying? And we had 3-day functions too, So anyway, very excited to be here. The lifestyle is true, freedom, And people say, like Sugit was saying, what's your average day? And he doesn't have an average day, right? I saw this, Anjali just showed this to me. My wife said, what you gonna do today? I said, nothing. She said, you did that yesterday. I said, I am not finished yet. That's only a matter of speaking, It's very seldom that I do nothing, but I like the choice. Okay? Like, I was talking about this earlier on at the Platinum meeting, is that, see, it's almost cliche. People that have a lot of money end up saying what? Money doesn't make you happy, correct? It looks nice when a really rich person says that. When you're broke and say money doesn't make you happy, it doesn't sound right. Okay? So, but that is the truth though. You talk to billionaires and John Maxwell talks about something called isolation. Because in any other business, the higher up you go, the more isolated you get. Because in the end, you're the only one, you're making more money than anybody else, and you're already at the top. And when you're at the top, there's only one way to go, correct? Okay? So I know that people who have reached vast amounts of wealth in terms of money have again and again, over so many years, have insisted that that's not where it is. What's more important than money is health, peace of mind, relationships, right? Value system, your spiritual foundation. And the reason I'm talking about that is because that sounds all fantastic in corporate America. But really, you cannot really, that priority does not exist. Because they look at the bottom line, it's money, right? The whole of Wall Street runs on money, correct? And if you have a job, God bless you, I hope you like it and everything like that, but you're on the expense side of your company. And there it's all about money, 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 and by the time people realize that it's more than money, it's about health, it's about relationships, it's about values, often it's too late. This is the business where you keep hearing that all the time. So when the money comes, you're ready. And you never really reach the top, guys. There is no top in this business. Somebody asked me, did you start, so you're in this pyramid? I always say yes. And I'm at the top of the pyramid. I don't argue with these people. Because when I respond like that, they immediately start liking the word pyramid. They don't know what to think, And they say, how long did it take for you to move up? I said, I didn't move up. I'm exactly where I was when I started the business. So what do you mean, don't you move up? No, I don't move up. Manipal is very easy. I don't replace him. Praveen, Madhu, Kanti and Lata, I didn't move up. I just stayed exactly where I am. Really? I'm not sure I know how it works. Exactly. You don't know how it works. You're not sure? I am sure you don't know how it works. How about that? You'll meet a lot of people. I hope you enjoy the journey. Vishal and Sonika talk about that. I hope you enjoy the journey. Have fun with it. Manipal said, check the fruit on the tree. Learn how to develop clarity of thinking. Okay? I'm going to title my topic today, Chi Poya. It's not Chinese. Chi. Can you say Chi Poya? I can't hear you. Chi Poya. Okay. In Tamil, which is my language, that basically means take a flying leap. It means take a walk. And you say that to people and you say that to situations. You should know when to say it. And if you can say, sometimes you can say it out loud, but most of the time it's inside, in your head. And when you do that, at least personally, when I say that in my head, my eyebrow twitches a little like that.
So if I do this in front of you, you know what that means? What does it mean? Chi, poya. When you do it, you got to do the little in the middle. Chi, poya. And if you do it in your mind, you're like. So I'm going to get back to that. Here is my beautiful wife. My daughters are in the room, at least two of them are. And when I saw Devika here and Tarika here, I said, I got to do a great talk. This pressure is on me, you know, right? I have to perform. And when I walk off, yeah, everybody will say you did good, but I want them to say it because my daughters are brutally honest with me. You know what I mean? Say, Daddy, how was my talk today? They might even do that. So this is, I'm talking to all of you, but I'm performing for them, okay? Life is just great, guys. I love the freedom. Okay, we are a simple, normal family. You know, we are not a low decibel family. You know, we talk a lot. We fight also, you know, right? But all good, all good. You know, there's a lot of excitement because everybody is extremely opinionated. 5 of us, in different ways. Okay, but they're a pleasure, guys. They just excel in everything. I used to be able to engage myself. None of them really needed academic help, but they used to enjoy. Like Devika used to enjoy talking to me about the various subjects. Till she was in middle school. Now she is in high school, and I don't understand what she's saying half the time. She wants to balance an equation. I can't remember what that is. She said asymptotic something curve. Yesterday I said, you know what? Sorry, I'm not going to, you know, you can talk, but you're not getting a response from me. See, she's learning all this stuff that I learned years ago. I learned it so many years ago that right after my exam, you know what I said? Chi, poya. How many of you have done that? You know how Bill Britt says whatever goes in your head stays in there forever? Not organic chemistry. I finished the exam and I said, Chipoya. Now, I'm not putting down education. I've told my daughters. I told her recently, I said, the value of school, I told them, is it teaches you how to learn. And it teaches you how to compete. But remember, you got to find your calling. Do well, do exceptionally well, be competitive, and they are. I don't have to tell them that. But school just teaches you how to learn and how to compete. Real life is out there. Like I want to talk to you about bullies. How about teaching people to stand up for themselves? I don't hear a whole lot of that. Oh, he bullied me. Even some basketball player, older guy is complaining somebody bullied him. I'm not saying bullying is good, but you should learn how to stand up too, right? You can't expect everybody to be nice. Raja was a bully where I was growing up. He was 3 or 4 years older than me. I was a scrawny little kid, skinny, falling sick all the time. And he used to bully everybody except me. I used to cry, he used to beat me up, I used to cry, but I used to fight. Because when he said, I am the boss of this area, of this building, I said, Chi, poya. I always stood up. And you need to learn how to do that. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. This business is for simple people, but it is not for weak people unless they are willing to become strong. Hello? Another English translation for Chi Poya is, so? I showed 50 plans, nobody got in. So? Hello? Anyway, I'm actually going to give the mic to my wife now. Keep talking. I mean, I just love it when he gets into his teaching. I mean, it's just, he's an incredible human being, an incredible teacher, and I can sit there. I just have very quick messages for you. Again, it's been great sharing this day with you, and we've learned so much today. It's been overwhelmingly inspiring, hearing all the great leaders talk and great teachers talk as you did all day, and there was just so much that was said. There was so much great information that was given to you, and I'm just going to try to put it all together the way we have seen things and what we have done in this business. You know, I mean, the first thing I would recommend you understand is that you are special, and all of us are special. We've all been created equal. We've all been created special, and to accomplish great things in our life, to, with the abundance that is given to us in all aspects of our life. I just hope you understand that whatever your past, whatever you have to work through, whatever situations you have to go through, you do understand that there is something that's bigger, better, and brighter tomorrow that's waiting for you.
And I hope you're willing to dream really, really big. You know, when I got introduced to this business, the one thing that my husband and I, when we got married and we sat down, it was like, what is your goal? What is your dream? What is it that you want to accomplish in life? And I hope you take a moment to sit down and talk. If you don't have someone, that your better half with you, sit down and write your goals down, Nothing is going to happen if you don't write it down. Dream really, really big. But you have to take a moment, and you will attract and get what you want in life if your desire is strong enough. And you hear about these great things, but understand how it all comes together for you. It's not going to come easy, as you've heard already. You'll have to prioritize your time, you'll have to prioritize your passions, and what it is that, you'll have to, I would just say that you'll have to just put things in certain priority as to what it is that will make you accomplish your goals as quickly as possible. Work really, really hard. The harder you work, the luckier you get. And, inspire yourself by your words and your own actions. I mean, today when we think back, and I think back about our story and about how we met, and even my story before I met my husband, it's just, I'm glad that we did what we did. I'm glad that I went through what I did, and I stood tall and did what I did, because it inspires me to talk about it and to give someone else hope as well. So whatever your story is, whatever your struggle is, it will come together for you later on in life if it doesn't right now. But always be very honest with yourself, and don't lie to yourself. I mean, if you have certain goals, just make sure that if you have not accomplished it, you can go back and check as to where you dropped the ball and where you let things go. And if you haven't done that, then just be so confident that it's just a matter of time how you'll accomplish it. You have to have very strong relationships in life. I mean, our strength is our relationship that we have together as a family, but also it's our relationships we have with people in life. And, spend time developing those relationships and friendships that will be given to you. Your success in life is how many people are better off because you lived. And what we mean by that is, what I understood of that is that you be nice to people. It doesn't matter, don't let people, abuse you for your niceness, but you have to be nice overall. Be a nice person that attracts people and good people into your lives. But be very, very bold, very confident about your life and where you're heading. I don't see any reason why anybody should be timid. I mean, we are all different personalities. I may not be as strong vocally as a lot of the other leaders, but as women in this business, we are very strong. I mean, women are accomplishing so many things in the outside world as well. But in our business, you have to be bold, you have to be strong, you be willing to do the work, and not shy away from the responsibilities of what it takes to be a business owner. And when we talk about a little bit about our lifestyle today, it doesn't really make sense unless you know our story as well. I mean, Kajal was talking earlier on this evening as to how her story was with her father and what she saw him stand for. And I mean, we have similar stories. We have different instances in our life where people have inspired us, and their memories and their and what they stand for stay with us all our life. The same thing happened with me in many ways, with my sister and me, and she spoke earlier as well. But when I came to the US, I was just 17 years old, and stayed in New York City. I was literally a high school graduate. For a lot of you that probably don't know, you have everybody here that is double masters and PhDs and accomplishing great things academically as well. Circumstances didn't let me continue my education, and that didn't stop me from accomplishing though. I mean, when I came here, I didn't have my papers. For the longest time, I had to work, whatever job I could get. Initially, it was like a messenger, and then I moved on to different fields, however it worked. I used my first paycheck, well, not paycheck, I got cash, but I worked for 6 days a week, from 8 in the morning till 7 at night, and I got $60 a week working 6 days, Monday through Saturday. So $10 a day. So you do the math. But you don't feel sorry for yourself. I mean, you do what you have to do. You have to survive, you have to do things, and it's just a passing phase.
you cannot turn around and say, well, oh, my dad should have done this for me and my mom should have done. They gave you a good education, they gave you a great family life if you were lucky to have that through them. But parents in your life, it's a privilege. If they leave something for you or they give something to you, it's up to you to make things happen for yourself, And don't just keep waiting for someone to hand things to you in your life. You have to make it happen. And we realized that at a very young age, even though I had a phenomenal childhood, but we did understand that what we had in our parents' home was a privilege. And we had to make it happen on our own, and we had to do things for ourselves, and great blessings would always be with us, their love and blessings, but we had to make things happen for ourselves. And when you have that kind of confidence in you, you attract all great things in your life. I mean, I don't know how these things actually work in a simpler form of how I explained to you. It's just a feeling thing. But, from the time I understood life, I just knew that I didn't want a handout. I didn't want somebody paying my bills. I didn't want somebody doing things. In fact, one of the hardest things when we got married was for me to ask my husband to give me money. And till date, I don't. He just keeps money in my account, and I don't, I just feel that, of course, everything is together. We have never questioned. When we got married, it was a joint account, our joint business, our joint life that we were starting together. We didn't have separate deals going on because we were so confident of our relationship and our togetherness moving forward. But you have to figure things out as you move ahead, When you are faced with challenges, what is your reaction going to be? Are you going to feel sorry for yourself? Are you going to stand tall and just do what you have to do to move on? You succeed by making those little decisions in life, by moving forward. As you say, it's your story, it's your fight. What is your story going to be? This business, this environment will give you the belief and faith to know that if anybody else can do it, so can you. But you have to believe that for yourself. A teacher will just as much open a door for you, but you have to choose to enter enter that door by yourself, So all these things that you hear will come together. But you stay humble, stay grateful, stay healthy, do everything possible to keep your self-image up. Don't let anybody tell you anything that will make that get affected, Stay away from people that can hurt you. As Kumar always says, there are three kinds of people. People that can do good for you, hurt you, or people that just don't matter. You stay away from the people that can harm you. You work with the people that are always positive and good and make you feel good about who you are. And be grateful. I mean, recently we've been hearing a lot about, Nelson Mandela, and he's such a great human being. And I'm just telling you, it's just inspiring, to hear people that go through struggles but stand tall for their cause and their belief, and they can be called anything along the way. I mean, I'm sure you will never have to do things like that because, but you will have to probably stand for your dreams and your goals and go home to home, finding the people that want a better life and show them what else is out there where they can be business owners for themselves, be part of this incredible opportunity and be part of this incredible business and this family. The more you are thankful for, the more things you will attract in life to be thankful for. And just understand the abundance of what is given to you in life and how you can just move forward. The Dalai Lama was, when asked what surprised him the most about humanity, answered man. Because he sacrifices his health in order to make money, then he sacrifices money to recuperate his health, and then he's so anxious about the future that he does not enjoy the present. The result being that he does not live in the present or the future. He lives as if he's never going to die, and then dies never really having lived. And you don't want to have that regretful feeling in life. Enjoy the present, enjoy the passion, the drive that you have today. Enjoy the opportunity for what it is. Every stage you're in life is a gift. I mean, nobody is promised tomorrow. We all have today. And there's no guarantees ever in life. So just make the best of who you are today and what you're capable of accomplishing and how far you can succeed in life.
And I mean, I just have a very grateful heart because we have a great family, we have a great home, we have a lot of love and happiness in our home always. We love each other, we respect each other. And you know, it's just a great privilege to be friends with all of you and to have you as our extended family as well. My husband is also an incredible human being. I mean, of course, he's coming up to talk to you some more. You know, he's on the board, as Manipal said, and it's a lot of responsibility. He's earned it, you know. When I talk about the dreams and goals we had, one of our dreams was he wanted to be part of the inner circle that that actually makes decisions and does what is necessary to move forward. And he wanted to be part of this team so badly. He wanted to be part of everything that Bill Britt had. And Kanti and Lata have, and he just wanted to be his right-hand person, and the whole team, the Brit Worldwide team, can count on us for anything. And today we have it, you know, the whole Amway team. He's part of the board, and there's a lot of decisions, a lot of responsibilities that he has, and he fulfills them to the utmost. I mean, he's just an incredible human being, and here he is. Okay. So, here's the thing. You have to develop a certain mindset. We are in the business of finding leaders. Okay? Now, it'll be great if everybody had that mentality. If everybody was a leader. But everybody is not a leader. Some people become a leader. Some people, you find them, they already are leaders. And some people will never become leaders. We don't know who's who. Some people just quit. Now you got to remember, this is the mindset, guys. It just works with numbers. 80, 85, 90% of the people in the world don't know what they're going to do tomorrow, let alone 2 to 5 years down the road. Now, just because you show the plan doesn't make them instantly intelligent. They're not going to jump into the 10%. Okay? So if you run into a patch where you're showing a lot of plans and you're not seeing a lot of results, don't worry about it. As long as you're improving and you're learning. Okay? Because that's the nature of the beast. You're looking for leaders. There are only 4 aces in a deck of cards. And if the deck is shuffled, you don't know where they are. And if you want to find them quickly, you got to start flipping the cards really fast. If you do it once a year, it'll take a long time. So, remember, you're in the business of finding leaders. You need focus. You need to listen to some people and not listen to others. Okay? The most valuable thing that we can offer you is mentorship. The products are there. Without products, it's ridiculous to try to build a business. Of course, you know, the amazing company with the high quality products, and the Nutrilite is just absolutely unbelievable, guys. And all their product lines. It is just mind-blowing. The quality they have and what it does for your health and wellness. Okay? You need someone to not only help mold you into being a leader, but also help you identify other leaders. And for you to understand that the person you're looking at may not be the person you're looking for. When you sponsor someone, see, that's the problem. Sometimes we sponsor someone, we worry them to death. We think that is the guy. No. They may not be the guy. You don't know that. Because the leader you're looking for may be someone they know, or someone that's known to someone that's known to them. Okay? It's called depth. And so, you know, the age-old teachings in the business is, first of all, the person you're looking at may not be the person you're looking for. Second is, you've got to get a leg 4 deep as quickly as possible, because a person is not registered in the business unless you have registered somebody for them. Okay? The whole thing is to get somebody sponsored, or at least do so much for them that they start listening to you. You with me? Okay? So it's about serving other people. And sometimes your hero, sometimes before Lion King shows up, you have Timon and Pumbaa showing up. Sometimes you have 10 Pumbas before you get a Lion King. Okay? So you should have that patience. That is the process. See, this process is magical. It is fascinating if you understand how this whole process develops, how the relationships develop. It's not just about catching some people, getting some people. You know? It's about developing a team of people and learning how to keep that team together. Okay?
I had to learn a lot of things. I was talking to you about, facing bullies while growing up. Little things that I learned along the way. I knew I could sing, but I didn't know that I was a better than average singer until the 1971 war. I was a little boy, and the Indo-Pakistan war was going on, and there were tracers in the sky. There were these lights, and we thought they were bombs. We should have known because they were going in the opposite direction. They were going up. They were trying to trace something in the sky. We all gathered together in the stairwell, and it was all blacked out. All the lights were off and everything. And so they said we had to keep ourselves entertained. So I started to sing. I sang one song as a little boy. I ended up singing 8 songs that night or something like that, and everybody just loved it. And that's when I knew, man, boy, you can sing, and you can sing in public. Sometimes you don't know that you're good. Okay, and then I took part in my first singing contest, and the guy who sang before me picked the same song that I was going to sing, and so I changed my song at the last minute. It's not organized like US guys. We didn't have an orchestra, and we didn't have, music and all that. You just go sing. Okay? Indian music is very like that. So I went and sang. I picked another song. I started off on the wrong scale, wrong pitch, lost my voice, and people started to laugh at me. And I was crying the next day. My dad said to me, well, do you remember who was laughing at you? Was it the kids that took part, or was it just the audience kids? And you know what, I thought about it and I realized it was the audience kids. The people that didn't have to take part, they'll laugh. They didn't have the guts to take part, they'll laugh. And I had some thoughts in my head which translates today to, chi, boya. I think I had defiance. I was a rebel. I had a lot of questions, and a lot of them are unanswered. I don't take anything that's just handed down to me without getting some clarification. Not that I don't. I do a lot of traditional stuff, cultural stuff, as long as it's not too strenuous. Okay? But when it involves so many other things, religious procedures, I question it. Okay? So, and my father always stood up. He used to always stand up for what was right, and he would take a stand in things. I remember that, People used to try and bribe him because he had access to the petroleum quota in Mumbai. He worked for the government. But people used to try and get all these dry fruits and nuts and all these sweets and good stuff to our home. And we didn't have all that. We didn't have access to all that stuff, right? During Diwali, during our holidays and stuff. My dad used to turn them down at the door. And said, take it back, And I used to think, maybe they can leave one box, But, to take it back. So I learned how to stand up for things, And in college I did that a lot. I got into a lot of fights with the faculty, okay, because some things were not right. I don't have time to get into all of that. When I came here, I was very grateful to get my scholarship, okay, because Drexel University, many of you know the story. I made a trip here on I wouldn't let my kids do that now, go to another country randomly like that, Came on a tourist visa first with a Greyhound book with unlimited travel for 1 month, $150 I paid for it. And I traveled all over the country chasing all the colleges where I had made applications to, because I had to get a scholarship. And I came here on my sister's airline ticket. She worked for an airline company, so I got a concession ticket. So I had to talk somebody to give me a scholarship. I must have talked to 12 or 14 universities all across, all the way till Texas, from the East Coast till Texas, going in a Greyhound bus back and forth. And I had to do a lot of cheap oyas. A lot of them didn't give me the money, didn't give me the scholarship, but Drexel University, Dr. Koren gave me what I wanted. And that's all I needed. I don't care how many cheap oyas you have to go through. You will find the people. There is no dearth of people that will help you accomplish your dream. There's only a dearth of dreamers. And so long as you're one of them, you're very special guys. You might see this as a big crowd, but this crowd is special. We sift through a lot of people to find intelligent people like you that have a dream, that can think out of the box. How could you resign yourself to corporate America? If you have I'm not putting down a job. I'm just saying you need to have something else to fall back on, because they can terminate you any time.
right? And look at all these people. Kanti has a PhD in medicinal chemistry. Kanti has been free for, I would say, 21 years or so. I have been free since June 17, 1994. How many years is that? 20, right? 19, something like that. Yeah. Then I talked to some of the diamonds back there. Kulin said he'd been free for 19 years too. Must have been the same time as I quit my job. Free. Think about it. Vishal said 12. I think Sanjeev said 12 as well. TD was 7. Sugit is 2001. How many years is that? And Kankan was 17 years. Kankan 17 years. Okay, and I know I'm missing some people. Ramesh, how many years? 7. Okay. I'm just saying, these are people that live free lives. I know Kanti, his boss told him, I shuffled your deck of my deck of cards and your card is not in the deck. Kanti said something which basically translates to what? Chi, poya. Because he already had this business. Kanti is a nice guy, But no matter how nice you are, no matter what you say, basically you are saying, take a flying leap. Because I am out of here. I don't need a job. Hello? You're with me? It's worth fighting for, right? Because you never know. Remember, no. Companies spend I'll tell you what is frustrating for companies. It's called marketing. A lot of companies have a lot of brilliant ideas. Even startup companies with brilliant ideas. But what is missing is marketing. They don't know how to market. Okay? And marketing is a different animal. Now what we have to realize, Amway does some marketing for us. Okay, they do some advertising and marketing for us. But each one of us is an individual business owner. And there are activities that we are involved in that Amway doesn't show up for. Our weekly PACE meetings, our open meetings, right? And we are in the marketing business. And we have to get good at it. Which means, what are we marketing? We are marketing the dream. We are marketing the team to people, the upline, the edification. We are marketing the atmosphere of this team. And the products, of course, you're marketing the products. See, but products alone is not enough. People have to like you. And so we got to think about it. I'm a business owner. You're a business owner. The CEO of your business is sitting on your chair right now, right? As a business owner, I got to think. Am I marketing my business? Am I really? What I say, does it excite people? Am I able to draw people? Did the new IBO who came to this PACE meeting, will they come back next week? And why do they come back? It'll be nice if they came back just for the dream. But it's too early for too many new people to dream. They come back because they liked something else there. Right? They, on Friday night, you're giving them a choice next week. Should they come to PACE meeting or should they sit at home and watch television? And you have to be more informative and more entertaining than television. It has to be fun for them. It has to be exciting for them. And you can't leave it up to just your upline. Okay? So how do you market something? Okay, so there's something called promotion versus just announcements. You learn how to promote. I'll give you a simple example. Without realizing it, I did some great things in the beginning. I had all these, CDs, you can say, okay, there, that I had my PACE meeting going on, nobody was picking any CDs up. They were just walking past it. They were just sitting there for months. They're walking past it like, like the cows in India. And the cows in India are really indifferent, they don't care. They walk right in the middle of traffic. And if you honk, they say, but what do they mean? Chi, poya. So I had a lot of guys looking at the tools saying, chi, poya, walking around. And then the game changer, his name is Ram Bomasani, Ram and Shailaja Bomasani. This guy gets into the business and he's hungry for knowledge. He is hungrier than even I was for knowledge. He gets in, he comes early to a PACE meeting and wipes out 80% of the CDs. I said to him, wait, don't put it in your bag yet.
This is marketing. Let's put your name on each one of them and write the name sold. Write the word sold and put it right back where it was. So all of a sudden 80% of the CDs have Ram sold, Ram sold, Ram sold. It reminds you of, the legend of Ramayana in Hindu mythology, where everything changes when you write the word Ram. Things start floating in air or water, whatever, right? So now all these guys who've been coming to PACE meetings for months, they walk past and say, hey, who's Ram? I wanted that CD. Really? You've been walking past it every week. Now they want it because Ram got it. You got it? That's when I realized. I said, even if I have 10 copies of a CD, I'm going to put 2 out. And if it gets sold out, I say, no more, next week. Got it? That was some of the things, guys. Now, let me tell you. There's something called Accreditation Plus, which Brit Worldwide has qualified for. The company approves the system. And one of the criteria for it, I have to tell you, this is optional. Coming to this meeting is completely optional. This is not, according to the company, this is not the only way that people grow in the business, okay? But I can only tell you how I succeeded and why I have freedom. You're with me? I have freedom because of an extremely strong educational system called Brit Worldwide. And our marketing is strong. When people walk in, we as a team, it didn't matter which leg that person was, a new person, not confirmed to function, not yet confirmed to function. Everybody knew it. As soon as they walked in, somebody would walk up to them and say, don't forget your food bars, don't forget your protein bars when you go to the function. Okay, make sure you pack some. Knowing that they haven't even confirmed yet. And somebody else would say, if you're going to Richmond, the best city in the country, Virginia. And the third person would say, you have not lived life till you have had coffee at the Maryland Rest House. Maryland House, rest area. Oh, Maryland House, rest area. We even showed pictures. Yeah, you gotta excite people, Get them, not just the function, but what's happening around the function, the trip here, the journey back. In India, they have these temples in the north, and they have these sculptures of, outside the temple, they have these sculptures of Kama Sutra. It draws people in, but once you enter the temple, nothing. Just a shrine. That's when you hear the sound from upstairs. Chi Poya. And it's not just people, guys. Sometimes it's circumstances. People will bug you. I'm telling you, people are like that. You won't have too many instances, but people will drive you crazy sometimes. Sometimes your prospects, sometimes a family situation, But you cannot let, I was telling people at the Platinum meeting that one thing you cannot do with a worry is worry about it. Because you cannot worry yourself out of a worry. Okay? At some point you got to do let it put it on the shelf, don't worry about it. Okay? You start focusing on what's good and what is happening. Because what you think is going to happen. Thoughts are things. They become things. I'll tell you what causes more frustration. Failure doesn't cause frustration. You know what does? Indecision and doubt. Because if you made a complete, unquestioned, unequivocal, you're not going to vacillate, you're not going to hesitate, you made a decision to succeed, period, end of story, then failures are a piece of cake. It won't bother you. The problem is when you're not sure. When you're not sure. Like, for example, people should know by looking at me if I'm a man or a woman. I'm just telling you why. Say, are people free to look any way they want? That's fine. But here's the problem though. People are biased when they get in. And you can't expect them to be all spiritually enlightened like Mahatma Gandhi when they get in. You got to accommodate for that. The less controversial I'm looking, the better it is. You know what I'm saying? If I look like a parrot, it's a problem. If Manipal looked like a parrot, when he showed me the plan, with a red mohawk and a green tooth and a gold ring in the middle of his tongue, free country, right? But here's the problem, I wouldn't have signed up. Because when he's showing the plan, I'm looking at the ring on his tongue saying, gold or not gold, gold or not gold. And I'm not listening to a word of what he's saying.
So check with your upline. I don't like to ruffle a lot of feathers. You know what I'm saying? Make it easy for myself in the beginning. Today, Manipal can have a mohawk. He can have a big tattoo. No problem. Dream big. I was watching somewhere recently, if you have a tattoo when you're young, you're not thinking enough about the future. Because that dream big in a skin that is tight and nice, after a while, when you grow old, it'll become... So, the less distractions, you know what I'm saying? Okay? You look in the HE magazine and see what people look like. I was willing to change. I was willing to stand up to some bullies. I was willing to change. And then I had to realize, like you have to realize, if you're how many brand new people here? Brand new. Brand new, let me hear you. Again, this is a grocery store approach, okay? Here we say what we want to say, and you pick what you like. You go to a grocery store, you don't like broccoli, you don't march out of there, you just don't pick it up. Okay? So, I realized, okay, now the CEO of your company is sitting on your chair. Every company, if it's a company, you have to have goals, yes? So do you have goals? Would you work for a company with no goals? Oh, you go for an interview and they say, well, really, we don't know why we set this company up, but we got to hire somebody. In this economy, you might still take the job, but you really want to stay there? Some of you are a head of a family with no goals. Just sitting on the couch and watching TV, your children see you do that. No goals. Who wants to be part of something that's going nowhere? Hope your children and your family enjoying you, not just tolerating you. Hello? So you have to have goals. Second thing, all companies have to have policies. Did you know that? You cannot have a company without policies. I used to work at Belcor and they had a policy. 11:30 to 1 is lunch. Whether you're hungry or not, that's when the cafeteria is open. And then they'd have this different things. They had personnel budget, they had equipment budget. 1 year they laid off all the people and bought new equipment because they had a shortfall in the personnel and excess in equipment. And I went and told the boss, can't you move the money from here to here and keep the people hired? He said no. I said why? He said company policy. In our business, Brit Worldwide has 9 core steps. Showing the plan, using your own products, retailing the products, being teachable, being accountable, going to all the functions, listening to all the CDs, being on standing on a program, attending all the functions, reading books, and one more. BWW technology. These are policies that you adopt. Showing 20 plans a month. Who cares if somebody gets in, somebody doesn't get in? Oh, and you got to take a stand. You say, I'm going diamond. Can you say that? I'm going diamond. I'm a diamond. Say it. I don't have any questions about it. All the right people are getting into my business. Because you will get what you speak, guys. It's a different topic, but you'll get what you speak. All the right people are getting into my business. My business is doubling from day to day. All my dreams are coming true. If you want to join the caravan, great. Because this train is slowing down to pick you up, but it ain't stopping. And if you don't like it, chi poya! Love you. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। बुधवार की सुबह मॉर्निंग मिरेकल में मैं रेखा सोनी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ। और आज की टॉक हमारे कंट्री मेंटर कुमार एंड अंजलि के द्वारा, जिनको हम सुनते रहते हैं, कभी लाइव में, कभी उनका टॉक सुनते रहते हैं। और चूंकि आज का टॉक अंग्रेजी में था, लेकिन आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि जो बातें यहाँ कही गई वो सारी बातें हर टॉक में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, बात सिर्फ हमारे बिजनेस के 9 कोर स्टेप्स की ही होती है ना। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स जो कंफर्टेबल हैं कैमरे पे आने के लिए, वो अपना कैमरा ऑन करें। और मेरे सभी नए दोस्तों के लिए मेरा छोटा सा परिचय,
मैं गुड़गांव से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और अपने परिवार के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और मैंने कुछ नोट्स बनाए, और मैं अपने नोट्स की आपसे बात करूंगी, और अगर आप कुछ अपना टेक अवे शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, क्योंकि टॉक के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज द इस मीटिंग का हमारा एक रिचुअल है। तो आज जो टॉक शुरू हुई, कुमार सर ने जो कहा कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि पैसा तो हम ऑलरेडी अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने नौकरी में जो भी हम कर रहे हैं, डिसाइड हमारा एमवे का बिजनेस हम कमा रहे हैं। ये जो बिजनेस है ना, ये एक होलिस्टिक बिजनेस है, जिसके अंदर हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, हेल्थ भी कमाते हैं, फ्रेंडशिप भी कमाते हैं, और एक एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग ऑन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे परिवार के अलावा एक और परिवार जब हमें इस बिजनेस के थ्रू मिलता है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो मॉर्निंग मिरेकल का जो ये परिवार है ना, ये एक मतलब एक सुकून देता है। जब सुबह उठ करके हम इस मॉर्निंग मिरेकल में आते हैं, और हमारे को पता होता है कि भाई सुबह उठ के मॉर्निंग मिरेकल में जाना है ना, वट एवर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते, तो ये एक एक्सटेंडेड फैमिली का ही फीलिंग है ना। और एक टर्म यूज किया गया, ची पोया, मैं भी सर्च कर रही थी उसको, इट्स अ तमिल वर्ड। इसका मतलब होता है कि जाने दो, है ना, लेट इट गो। एंड बहुत सारी बातें की गई, और मैं अपने टेक अवे शेयर करूंगी बीच बीच में, लेकिन अब हमारे बीच में लीडर्स के हैंड रेज होने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले ज्योति रंजन जी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, आप आए और टेक अवे शेयर करें। धन्यवाद रेखा मैम एंड नमस्कार सभी को। मैं ज्योति रंजन सहाय मुंबई से ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूं, और अपने एक्टिव प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को इस एसोसिएशन के साथ मिल करके मैं बिल्ड कर रहा हूँ। कुमार सर और अंजलि मैम की टॉक, ये वाली टॉक हमने पहले भी सुनी है, कई बार सुनी है। एंड यस, कुमार सर का उनकी एक शैली है, उनका एक तरीका है जिससे कि वो अपने टॉक को बहुत इफेक्टिव और बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब वो अंजलि मैम जब बात कर रही थी, और वो बताएं कि जब उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत उन्होंने कब करी, किस एज पे करी, इस बिजनेस में आने से पहले, दो द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होती है वो मेरे अंदर बिल्कुल जीरो थी। कि ग्रेटिट्यूड किस चीज को कहते हैं मुझे कुछ मतलब उसे कोई मतलब ही नहीं था। जब अंजलि मैम ने बताया कि किस एज पे उन्होंने नौकरी शुरू करी, जब वो काम करती थी, $60 की पेचेक थी उनकी, वो भी कैश में थी, 6 दिन का काम करके, तो हिसाब से एक दिन का $10 हुआ। मैं अपने आप को उस एज में जब लेकर के गया कि उस एज में मैं क्या कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे नहीं मालूम कि अंजलि मैम क्यों उस एज पे जॉब करना शुरू करी थी, लेकिन मेरे ऊपर मेरे माता पिता की ऐसी ब्लेसिंग थी कि मैं उस समय पढ़ाई ही कर रहा था और अपने करियर को बनाने के लिए शिक्षा ही ग्रहण कर रहा था। ये चीज अगर इस टॉक को मैं नहीं सुनता तो मैं जीवन में, और इस बिजनेस में नहीं होता, आप लोगों के एसोसिएशन में नहीं होता, मैं जीवन में कभी इस चीज को नहीं समझ सकता था। और एक लाइन जो बिल्कुल बिल्कुल हिट की कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ फाइंडिंग लीडर्स। कोई लीडर बने बनाए नहीं होते हैं, एक लीडरशिप एटीट्यूड होती है, हमको वो मिल जाए वो वंडरफुल। कोई लीडर बनने को तैयार हो, ड्रीमर हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस है जो स्लो डाउन कर रही है टू पिक यू अप, बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू। ये बस चलती जाएगी, आप इस बस पे सवार हो जाएंगे तो आपको वो सहयोग, वो संगति मिलेगी जिससे जीवन में वो परिवर्तन हो सकता है जो सारे लोगों के बारे में उन्होंने गिनाया कि कौन कितने साल से रिटायर्ड है। कोई 7 साल से, कोई 12 साल से, कोई 21 साल से रिटायर्ड है। वो लाइफ हम भी जी सकते हैं और अपने साथ अपनी टीम के लिए भी उस लाइफ को हम ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, एंड बैक टू यू। थैंक यू ज्योति रंजन जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और एक पॉइंट सर ने बताया था कि एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ऑलवेज फाइंड फॉर द कॉलिंग। हम चाहते क्या है ये जीवन में, अपने जीवन में हमारा मकसद क्या है इस धरती पे आने का,
वो जितनी जल्दी हम लोग पा लें उसको, हमें मिल जाए, तो वही सबसे बढ़िया मतलब एक कॉलिंग है, और उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सयाना जी को कि वो आए और अपनी बात हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाम राजेंद्र सैयाना। जबरदस्त टॉक चली, और थोड़ा सा इसमें बार बार वो टर्म आ रहा था ना, जो है चीप बोया तो हम भी कभी उसमें थे यार, ये क्या क्या मतलब है इसका तो थैंक यू, आपने बता दिया, जाने दो, है ना, लेट इट गो। तो यस, एक्चुअली में जो है हम लोग जो बिजनेस जो कर रहे हैं ना, देखिए इनकी शैली बहुत बिल्कुल अलग है। बहुत मतलब इसमें समझ ही नहीं आएगा कि यार बिजनेस बिजनेस के बारे में क्या बात किया जा रहा है ना। पहले एक बहुत ही जॉली नेचर्स के हैं। तो उन्होंने कैसे इस बिजनेस को बनाया, देखो, मतलब उन्होंने वो किसी के पीछे नहीं पड़े। उन्होंने, मैंने उनकी एक और भी टॉक कहीं सुनी है, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, हम जो है लीडर्स क्रिएट करने के बिजनेस के अंदर है ना। हम जो है लीडर ढूंढने के, हम कोई किसी को मेंबर बनाने के बिजनेस के अंदर है ही नहीं ना। तो जाने दो, अगर कोई नहीं करता है तो छोड़ो उसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करें, और लोग ही लोग हैं। तो आज हमारी, मतलब आज हमारी टेंडेंसी यही हो गई कि हम किसी के पीछे अब पड़ने वाली बात ही नहीं है। किसी से बात कर लिया, हो गया तो ठीक है, उसको है चीप बोया वाली बात है। तो इससे जो है ना, दो चीज, इससे चीजें स्पष्ट ये होती है कि देखो, हमारे माइंड के अंदर फिर कोई गिल्टी फील नहीं होती कि यार यार वो नहीं कर रहा है, वो नहीं आ रहा है ना। तो हम जो है हमेशा नए की तरफ ढूंढते हैं, और लीडर्स का काम ही यही है, लीडर्स का काम ही यही है कि भाई जो है हमेशा आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो कि पीछे क्या हुआ। जो जिसने छोड़ दिया छोड़ दिया, जिसने जो भाग्य भाग्य, जो नहीं कर रहा नहीं करने दो। लोग ही लोग हैं यार। हर हर एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। 18 साल बाद वो आपके बिजनेस के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो लोगों की कमी थोड़ी नहीं, हम तो लोगों पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मेन तो ये है। तो कितना हम लोगों पे पहुंच पाते हैं, वो हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, है ना। और बस यहाँ पे यही है कि कौन डटा रहता है, कौन फास्ट करता है, कौन कितना जल्दी जो है अपने को चेंज करता है, और वो उसकी सक्सेस अपने आप। और जैसे उन्होंने बताया था कि डायमंड, तो डायमंड कौन बोलेगा आप कितने समय में डायमंड जा सकते हैं। आप अपने आप को मान सकते हैं ना कि यार आई एम ए डायमंड, बस दैट्स ऑल। किसी से प्रूव की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी से कोई प्रूव की जरूरत नहीं। और हमने डिसाइड कर लिया आई एम ए डायमंड, तो आई एम ए डायमंड, बस दैट्स ऑल। थैंक यू, बैक टू होस्ट। जबरदस्त थैंक talk। यू सयान, थैंक यू सयाना जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी पोया, लेट इट गो, जाने दो, हमारे लोग हमें मिलेंगे। और एक एक बहुत ही अच्छा बात कही थी कुमार सर ने कि सेल्फ इंस्पिरेशन इज द बेस्ट। अगर हम अपने काम और अपने शब्दों से खुद इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो इससे बेहतर इंस्पिरेशन इस धरती पे नहीं है ना। अगर शीशे में देख के खुद को मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ यार आई प्लेड वेल, तो हम एक सही रास्ते पे हैं, जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन इज फॉर श्योर हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पीयूष सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। पीयूष सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पीयूष फ्रॉम नैनीताल। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, और अमेजिंग टॉक रहती है कुमार सर की और अंजलि मैम की। अगर हम आज की टॉक की बात करें, डेफिनेटली उन्होंने चीप होया वो तो फोकस किया ही, वो बहुत ज़रूरी है आपका माइंडसेट होना कि लोगों को जाने दें। और अंजलि मैम ने ना, मैं कहता हूँ ये बिजनेस ना लाइफ की फिलोसफी है, जैसे अंजलि मैम भी बता रही थी कि आप अपनी लाइफ इनिशियली टाइम भी और अपने कहना चाहिए सेहत को भी दांव पे लगाते हो एक इनकम को जनरेट करने के लिए, और वो भी सफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद फिर आप उस पैसे को दांव पे लगा देते हो वापस उस लाइफ को रिक्रिएट करने के लिए, और बाय द एंड ऑफ लाइफ यू फील गिल्टी ओनली, अफसोस केवल, यार हम तो लाइफ जी ही नहीं पाए। और यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डे वन से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जैसे इस लाइफ में हम इस एसोसिएशन में आ रहे हैं, तो हमको पता है कि वी आर द बेस्ट, क्योंकि हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। तो केवल एफर्ट करना है। सेकंड, जो कुमार बात कर रहे थे कि हम लोग मार्केट किसकी करते हैं, एक्चुअली हम मार्केट साबुन पेस्ट की नहीं कर रहे हैं, हम ड्रीम्स की मार्केट कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली दिस एसोसिएशन की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम मेंटर्स की यानी अचीवर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, यू कैन डू इट टू, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि बिजनेस ना लीडरशिप का है, और लीडरशिप एक्चुअली बड़ा अलग सा वर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फॉलो कर सकते हो तो लीड कर सकते हो। लीड करने का मतलब आप किसी के अंदर विश्वास पैदा कर सकते हो,
किसी के अंदर साहस पैदा कर सकते हो, किसी के अंदर आप सपना देखने की ताकत पैदा कर सकते हो, और किसी के अंदर पूरा किया जा सकता है इस कमिटमेंट को पैदा किया सकते हो, अनुशासन पैदा कर सकते हो। दिस इज द लीडरशिप एक्चुअली। तो शैली की बात करते हैं तो कई बार वो आक्रामक भी होते हैं, कई बार बड़े कैजुअल भी होते हैं, बड़े कॉमेडी भी कई बार करते हैं। तो अल्टीमेटली ये लगता है कि यार किस तरह से हम लोगों को अट्रैक्ट करते हो, किस तरह से लोगों को साम में लेके चलते हैं। उन्होंने बताया ना, बात ज्वाइन करना और वो नहीं है, बात यह है कि कितने टाइम तुम साथ में और लोगों को बॉन्ड बना के रख सकते हैं। अमेजिंग टॉक था, अमेजिंग टॉक था, और डेफिनेटली चीप हो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। थैंक यू एंड बैक टू यू मैम। थैंक यू पीयूष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके टेक अवेज ना बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं, और बिल्कुल नोट डाउन करने का हमेशा रहता है कि हाँ, शब्दावली इज अमेजिंग। आपका शब्दावली को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट लखन जलोटा सर। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू रेखा मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, तो बस आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो वाकई में मैं जब कुमार का सीडी सुना तो आई एम वेरी फैनेटिक अबाउट दीज कपल, क्योंकि जबरदस्त स्पीकर्स हैं और मेरे बहुत फेवरेट हैं। और जैसे देखिए, इतने हाई प्रोफाइल के लोग जब मोटिवेट करते हैं ना कि इस बिजनेस में आने के लिए, जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैं बेसिकली लखन जुलोटा नाम है मेरा, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं डॉक्टर हूँ। और जैसे मैंने भी इस बिजनेस को 99 में ज्वाइन किया था किसी एक सीनियर के कहने से, दबाव पे आके, देन आई लेफ्ट इट। रिन्यूअल आया, फिर मैंने किया नहीं, मैंने कहा क्या करना है। फिर उसके बाद कई लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, बहुत लोगों ने, लेकिन लास्टली डॉक्टर द्विवेदी सर आया, तो उनका काफी मैं रेस्पेक्ट करता था। ही वॉज अ वेरी फेमस डॉक्टर एट दैट टाइम, तो बिकॉज ऑफ हिम आई ज्वाइन। तो कहने का मतलब, देखिए दोनों कपल ने जो बोला उसमें एक टेक अवे सबसे बड़ा था। मैम ने जैसे बोला ना कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, और ड्रीम की बात की कि कहा दोनों लोग मतलब बेटर हाफ बैठ करके एक ड्रीम, जैसे डायमंड हमारे ग्रुप के हमारे अपने मिस्टर आरपी सिंह सर हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे कि 5 ड्रीम बनाने हैं, उसमें से कम एक इमोशनल ड्रीम हो जिससे आपकी आंख में आंसू आ जाए। जैसे एक मेरा ड्रीम है, बेटा मेरा टेनिस खेलता है, अभी यूएस में है ना, तो अभी आजकल आया हुआ है, उसके जाने का टाइम हो रहा है, तो अंदर से कल वाइफ भी रोने लगी। तो ऐसा होता है ना कि बस इसके साथ रहना है। तो दैट नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी बोथ, क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो यू कांट अर्न, यू कैन नॉट अफोर्ड हिज एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट। एक ड्रीम होना चाहिए जो इमोशनल है, जो आपको अंदर से हिला दे। फिर उन्होंने गोल की बात की, फिर हार्डवर्क की बात की। अब टेक अवे ये था, देखिए दोनों ने अपने अपने फील्ड में, शी वेंट टू यूएसए एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, और वहां से उन्होंने, जैसे बेटा मेरा भी है, ये लोग भी वहां पे कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे उन्होंने $10 पर डे की जॉब करी, तो ये भी बोला उन्होंने कि किसी को, यू हैव नॉट टू क्रिटिसाइज योर पेरेंट्स इवन, है ना, उनको रेस्पेक्ट करना है। उन्होंने आपको इस जीवन में लाए हैं, जो भी उनका हो सकता है, दे हैव सपोर्टेड यू, है ना, मॉरली एंड फाइनेंशियली, तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। और बेसिक नीड के लिए बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है ना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक इन्होंने वही बोला कि सबको आपको ग्रेटिट्यूड देना है और बेसिक नीड्स के लिए वर्क किया। वहीं सर का हुआ उन्होंने कि आफ्टर डूइंग हिज प्रोफेशनल डिग्री एंड ऑल दैट, तो बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने अप्लाई किया। तो वही उन्होंने बिजनेस में उसको मतलब एक बिजनेस में उसको कैसे करना है कि आपको भी इसमें लोगों को ढूंढना है। जैसे सर ने बात की ना कि यू, इट इज द बिजनेस टू फाइंड आउट द लीडर्स। भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। अब लीडर कैसे मिलेगा, तो एग्जाम्पल उन्होंने कार्ड का शफल करने का बोला कि राइट कार्ड आपको कब मिलेगा, जब आप शफल करते हो। तो यू डोंट नो, बस प्रोसेस है, उसको आपको करते जाना है ना। और लीडर्स को ढूंढना है। जैसे उन्होंने एक बात बताई कि एक नया अगर पर्सन ज्वाइन कराते हो, तो जब तक उसके 4 डीप आप खुद नहीं करते हो, तो अंटिल अनलेस ही हैज नॉट बीन स्पॉन्सर्ड, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको करना है। फिर सर ने बात की कि मतलब ये जैसे कंपनी से कंपेयर किया उन्होंने। जैसे कंपनी होती है तो उसमें गोल्स होते हैं, है ना, उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे बताया उनके बजट्स होते हैं। तो लकली हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस इतने नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी गोल्स आपको बनाना होगा ना, पॉलिसी भी आपको उसमें बनानी है। जैसे सर ने 9 कोर स्टेप की बात करी, है ना, तो वो एक तरह से पॉलिसी है, उसको हमको फॉलो करना है धीरे धीरे करके जो है। तो जबरदस्त टॉक रहा दोनों का। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अतुल सर को कि वो आए सर और अपनी बात हमसे शेयर करें सर। ओवर टू यू। थैंक यू रेखा मैम। नमस्कार सभी को। नाम अतुल सक्सेना, देहरादून से कनेक्टेड हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आईटी प्रोफेशनल हूँ। बहुत ही शानदार टॉक कुमार सर की, और कुमार सर तो अल्टीमेट है ना। ये जो सबने कहा कि उनकी शैली बहुत ही जबरदस्त है, कभी वो सख्त होते हैं, कभी वो नरम नरम, कभी सख्त सख्त, है ना।
तो वो क्योंकि ये लीडरशिप, आलोक सर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब वो कल परसों कह रहे थे कि आप ये समझो कि बस मैं कॉलर पकड़ के ही बात कर, तो वो जरूरी भी है कहीं ना कहीं, ये तो एक चलिए लर्निंग का पार्ट है। लेकिन जो ये शैली है ना, ये मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कि जब आप उसके अंदर, जो सिस्टम के अंदर आप हैं, जब आप उसके अंदर रच बस जाते हैं ना, बिल्कुल जैसे वो अचार होता है ना, बिल्कुल तेल के अंदर, फिर उसका टेस्ट मजेदार होता है ना। तो जब आप उसके अंदर रच बस जाते हैं बिल्कुल ना, तब जाके फिर वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बैक ऑफ द माइंड में चलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कहाँ पे बैठे हो, क्या आपके पास है, क्या आप देने जा रहे हैं। जैसे आलोक सर पहले बोलते थे कि आपके हाथ में एक सोने का सिक्का है, मुट्ठी बंद है, अगर आप किसी को दे रहे हो, मना कर रहे हैं, तो आपको तो मालूम है ना कि वो सोने का सिक्का है, उसको बेशक नहीं मालूम। तो ये जब आपको मालूम होता है कि आप क्या देने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, जैसे अंजलि मैम ने भी कहा कि मतलब कंप्लीट हेल्दी हैप्पी लाइफ आपके लिए है इस सिस्टम में। तो जब आप ये सब चीजें खुद से पहले समझते हो उतनी गहराई से, क्योंकि समझने के भी कई स्तर है ना। आलोक सर बोलते थे ना कि जब हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे पढ़ने के लिए तो हम सुनते थे, तो क्या हम सुनते थे। तो सेम वही समझते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं, तो उसकी समझ की गहराई भी धीरे धीरे अब बिल्ड हो रही है। तो अब वो एक अलग ही तरीके से नजर आ रहा है हाईवे ना। जैसे जब आप जंगल के रास्ते निकलते हैं, फिर आपको अचानक से दिखता है कि अरे यार इतना बड़ा हाईवे है, और फिर उसके आगे मतलब एक सूरज की रोशनी अलग से दिख रही है, तो वो एक अलग ही, आप आंखें बार बार मल के देखते हैं कि यार ये क्या वास्तव में मैं आ चुका हूँ हाईवे के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम शायद उस प्रोसेस में, इसके माध्यम से हम अब धीरे धीरे आने लग गए हैं, और ये बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसमें शब्द मेरे अपने हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन जो आपका माइंड सेट है वो कुमार वाला पकड़ना पड़ेगा। या जो भी जो लीडर है, जो आज की टॉक के रेफरेंस में कुमार वाला माइंड सेट हमें पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या ये पिरामिड है, तो अब हम होते तो हम, नहीं साहब ये उल्टा पिरामिड है, ये सीधा है, ये यूं नहीं है, ये क्यों नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हाँ ये पिरामिड है, आई एम ऑन द टॉप। सिंपल फंडा है, बिल्कुल क्लियर कट एकदम, कोई इसमें है ना सीधी बात। वो आता था एक, हम सब सुनते ही है ना टीवी में देखते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक जब तक हमने कुछ नहीं हासिल किया था इसमें, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम वो जो एमवे की सक्सेस की जो स्फेरिकल बाउंड्री थी ना, हम उसके बहुत दूर कहीं टहल रहे थे। जैसे ही मॉर्निंग मिरेकल शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके हम उसकी बाउंड्री के आसपास आ गए। अब क्या होगा कि जब हम सीखते रहेंगे, और काम तो करना ही है, काम का कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई बात नहीं हो रही है ना, काम तो हम 100% करना ही है। अब जब हम धीरे 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 करके उस बाउंड्री के अंदर आएंगे, फिर एक दिन हम सेंटर में होंगे, और फिर लोग हमारे चारों तरफ होंगे, तो वो हम करना चाह रहे हैं। जैसे सर ने भी लिखा ना कि इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। तो ये आसान नहीं है, आलोक सर हमेशा बोलते हैं कि जब आप आएंगे उस जर्नी में डायमंड की, तो आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात आप खुद से पूछिए, क्या आप आसान ढूंढ भी रहे हैं? हम आसान ढूंढ भी तो नहीं रहे। और डायमंड होना मतलब अगर आसान होगा, तो फिर क्या उसका फायदा क्या रह जाएगा, है ना। तो ये आसान नहीं है, और हम आसान ढूंढ भी रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं वर्थवाइल थिंग। और एमबे डायमंड होना वो वर्थवाइल थिंग है, जिसे हमें हासिल करना ही है। और बहुत जल्द ये सब चीजें, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से होंगी, क्योंकि जो अब तक का अंदर का संघर्ष था ना, वो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये जो इनर विक्ट्री है, यही मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे वहां तक लेके जाएगी। क्योंकि अब हम रोज काम कर रहे हैं, रोज मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे आप जब बिल्कुल थक जाते हैं शाम को, थकने के बाद जब आप सोते हैं, तो एक आपको कॉन्फिडेंस की वजह से और आपके काम की वजह से बढ़िया नींद आती है, कि आपने मतलब जो करना था वो किया आज। और फिर रात को जब मैं 12:30 बजे, नलिन सर ने एक दिन कहा था कि वो 12:30 सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत ही मेरे लिए तो और भी ज्यादा प्रेरणादायक है। मैं भी लगभग 12, 12:30 बजे सोता हूँ, सुबह को 5 बजे उठता हूँ, लेकिन बढ़िया नींद आती है। और सुबह 5 बजे से दिमाग में ये चलना शुरू होता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है, पूरे दिन की एक बढ़िया प्लानिंग बनती है, और काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। यही एनर्जी, यही जो विचार है, और यही जो जिंदगी की फिलॉसफी है एमवे के माध्यम से क्या मिल सकता है, वो लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कि मतलब वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर देम। तो वो अगर हमारे साथ जर्नी में आते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू आलोक सर, थैंक यू नलिन सर। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू सो मच। और अब हम मैं रिक्वेस्ट करूंगी नलिन सर से कि वो आए और हमें जो है अपने टीचिंग से एनलाइटन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू रेखा जी। सबको नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन हूं मैं बाय प्रोफेशन और प्रयागराज से। कुमार को जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा यार ये क्या तरीका है बात करने का, भाई ये कोई स्टेज पर खड़े होकर बोलने का, ये तो अजीब सा तरीका है। फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना, लेकिन फिर उसके बाद जब सुना तो जो उनकी यूनिकनेस है
बात करते समय उन्होंने कहा ना कि मैं आपसे बात करूंगा पर अपनी बेटियों के लिए परफॉर्म करूंगा बिकॉज बाद में पूछेंगे अगर कि भाई तुम कैसा बोला तो वो कुछ भी रिएक्शन दे सकती है। तो दैट वाज द मेन थिंग अबाउट हिज टॉक्स कि वो एफर्टलेस, उनको ये लगता ही नहीं कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। ही टॉक्स, और मेरी आमने सामने भी उनसे बात हुई तो वो जो स्टेज से बात करते हैं और जो आपसे अलग से बात करते हैं एकदम सेम है, कोई इसमें फर्क ही नहीं है। और फिर वो जैसे जैसे ये समझ में आती गई बात कि ये जो स्टाइल है इतनी यूनिक इसलिए है बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज अबाउट एमवे बिजनेस। आप देखिए कल हम लोग वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे तो उनके वाइब्रेशन आप चेक करिए किस लेवल का है वो। और सबसे जो बड़ी बात होती है कि जब आप उनको सुनते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है, यू फील सो इलेटेड अबाउट द बिजनेस। आपको लगता है मैं इस बिजनेस में हूँ, ये कितनी यूनिक बात है। और वो तरह तरह से उसको रीअफर्म करते हैं। जैसे आज चीप होया करके उन्होंने बताया कि मतलब एकदम केयर फ्री, नथिंग। और ये जो एक चीज होती है ना लीडर्स में, वो बड़ी जबरदस्त होती है। इसीलिए वो हम सबके कंट्री मेंटर हैं, अनिल नारंग भी उनसे गाइडेंस लेते हैं, आलोक जी, ये सब लोग। तो जो खास बात है वो ये है कि इसी तरह की शैली में वो बहुत काम की बातें कह जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और आई एम सो हैप्पी डॉक्टर जलोटा ने आज बहुत ध्यान से सुनी सब बातें और एक एक चीज उन्होंने बताई। एक्चुअली इनको सुनने का, कुमार को सुनने का एक तरीका है, अगर आप अ, ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सी चीजें मिस कर जाओगे, क्योंकि वो हंसते हंसते पता नहीं कब वो बोल जाएंगे। जैसे मार्केटिंग की आज बात करी उन्होंने, और पीयूष जी ने वो कहा कि हम क्या मार्केटिंग करते हैं हम मार्केटिंग ये करते हैं कि देखो यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, हमारी जितनी एक्टिविटीज है उसमें नया व्यक्ति आके कितना अच्छा फील करता है, दैट इज व्हाट वी आर मार्केटिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि नया आदमी आता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है, बट हमारा एफर्ट होना चाहिए कि जब वो आए तो फिर वो दूसरे दिन भी आए। और ये जो हमारा मॉर्निंग मिरेकल है वो बिल्कुल इसी शक्ल में है कि एक बार कोई आता है तो उसको दोबारा आने का मन करता है। अब यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट कि क्या होता है वहाँ। हम तो किसी को भी इनवाइट करते तो हम कहते हैं हम बता नहीं सकते कि वहाँ क्या, बस तुम आके देखो, बस जस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि हम ये बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक टॉक, कई बार मैंने सुना है, मैं बार बार आई लव लिसनिंग टू कुमार बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल। जैसे उन्होंने वो बताया ना कि भाई किसी से बात कर रहे थे कि आप तो बहुत ऊपर चले गए हो, तो उनका नहीं मैं बिल्कुल वही हूँ जहाँ था अब ये किसी को भी मजबूर कर सकता है कि किस तरह का ये बिजनेस है कि जहाँ थे वही है, बट स्टिल ही सो मतलब प्रोग्रेस है, इतने हैप्पी हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ थे वही है। तो ये जो बहुत जबरदस्त है, और मुझे उम्मीद है कि आज सबने सुना होगा। इंग्लिश भी बड़ी सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो, और इसको एक बार और सुनने की जरूरत है। तो थैंक यू रेखा जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इनका अपना एक अनोखा शैली है और इम्प्रेसिव शैली है, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। और नाउ एट द एंड ऑफ दिस मॉर्निंग मिरेकल, टू कंक्लूड दिस सेशन, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मेंटर आलोक जी टू इंस्पायर अस विद हिज टीचिंग। ओवर टू यू सर। थैंक यू रेखा जी। और बिल्कुल जबरदस्त टॉक है ना। और बिल्कुल देखिए मैसेजेस तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि यदि हमें, देखो एक होता है समझ में आना कि हमने समझ लिया उस चीज को, वहां बात खत्म नहीं होती, वहां से बात शुरू होती है मेरे ख्याल से, है ना। यदि सच में समझ में आ गया, है ना, और जो लगता है कि हाँ सच में समझ में आ गया, अब क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या करना, क्या किया हमने, है ना। अब ध्यान से समझिए, आपके समझ में आ गया और आपको वो पता चल गया जो एक्चुअली में मेरे को पता चला, है ना। तो अब मैं जहां पर हूं और आप कहां पर होंगे अगले 2 साल में, वो इस पर डिपेंड करेगा कि अब आप इसके बाद क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो काम यदि नहीं किया हमने तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि इसका कुछ मिलना ही नहीं। एमवे तो रिकॉग्नाइज नहीं करती ना इस चीज को, है ना। आप देखिए कोई, जैसे उन्होंने बताया कि मैं वहीं पर हूं, उसका मतलब यह है कि भाई मैं जब जुड़ा था तो एक एलओएस में एक जगह पे पोजीशन थी मेरी, तो मैं वहीं रहूंगा जिंदगी में, है ना। लेकिन यदि मैं, मेरे को बिजनेस समझ में आ गया और मैं अच्छे से करता हूँ उस तरीके से, तो मैं कुमार की जगह पे भी पहुंच सकता हूँ, उनके साथ में भी आ सकता हूँ। क्या जबरदस्त चीज है, सोच के देखिए दोस्तों, है ना। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि
आपके जो एक्शंस हैं, देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मॉर्निंग मिरेकल हो रही है या हम FRU कराएंगे या 1 तारीख को फेस टू फेस हो रहा है, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होनी है उसमें, है ना, क्योंकि स्पेशल कुमार ने हम लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि सबको 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 भेज, बस एक ही काम करो इस टाइम पे कि फेस टू फेस में भेजो लोगों को। उन्होंने बोला हम लोगों ने नॉन डिस्क्लोजर का साइन किया है एमवे के साथ में, क्योंकि डेफिनेटली एमवे ने इनके साथ डिस्कस किया होगा, बोला हम बता नहीं सकते आपको, बट भेजो सबको, है ना। आप सोच के देखो किस तरह से क्या चीज हमारे पास आ गई है, एमवे किस जगह पे पहुंचने वाला है अगले 2 साल में। जो 20 साल में नहीं हुआ है वो 2 साल में हो सकता है। देखिए 2013 की टॉक थी, 2013 सोच के देखो, है ना, तब कहां पर बिजनेस था, क्या बिजनेस था, किस तरीके से हो रहा था, लेकिन आपको लगा ऐसे कहीं पर भी कि आज रेलेवेंट नहीं है कोई भी एक लाइन? लगेगा ही नहीं, 50 साल बाद भी नहीं लगेगा, 50 साल बाद भी ऐसे ही होगा, है ना। बट क्वेश्चन पता है क्या दोस्तों, कि इसी मीटिंग्स में फिजिकली यदि कोई गया होगा तो उसके 2 साल बाद वो डायमंड हो गया, और इसी मीटिंग में फिजिकली जाने के बाद कुछ लोग सिल्वर प्लेटिनम तक गए, और इसी मीटिंग में बहुत सारे लोग अगली मीटिंग में ही नहीं आए, है ना। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आप बोलेंगे आलोक जी बहुत अच्छा है यार, मॉर्निंग में रखकर तो मजा आ गया, अब तो बस कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। मॉर्निंग में कल तो रोज चलेगी, और अगस्त भी हर बार आएगा। आए ही तो है इतने सालों से, है ना। अभी दिवाली आने वाली है, बताओ कब से आ रही है और कब तक आएगी, है ना। लेकिन एक साल ऐसा होगा दोस्तों जो आपका होगा। मेरे लिए वो अवेकनिंग था 2008। देखो हम सफायर हो चुके थे तब तक, बट मेरे को बिल्कुल याद है कि सफायर तक मेरा बिजनेस जो था वो बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से चलाते थे, बस कुछ सोचना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेशन पे चलता था, सिर्फ मोटिवेशन, है ना। 2008 के बाद समझ में आ गई चीज, समझ में। उसके बाद कब हम एमराल्ड गए, फिर फाउंडर एमराल्ड गए, फिर डायमंड गए, वो जर्नी तो अलग ही हो गई बिल्कुल, फिर वो अलग। लेकिन वो जो सुकून मिला वो समझ में आई चीज है ना। ये समझ में आया कि कितनी बड़ी चीज हमारे पास है। तो मैं वही आपको बोलूंगा दोस्तों, यदि समझ में आ गया तो आज से जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी, है ना। किस तरीके से काम करता है आदमी जब कहीं पहुंचना होता है उसको, है ना। फोकस्ड होता है, इधर उधर नहीं देखता है। उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है रोज की, यार क्या कर रहे हो तुम, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं हमारे बिजनेस में ये इट्स अ टीम वर्क। अच्छी चीज क्या है, ये बिजनेस टीम वर्क है। टीम वर्क में 90% काम, 95% काम, 99% काम आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन कर सकती है ना। लेकिन वो जो आपका 1% है ना, उसका 100% देना है ना। इसको ऐसा समझ लीजिए, एक दिन मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था आपको, कि आप एटीएम में गए और आपने चेक किया कि पैसे कितने हैं, और वहां पर 99 रुपीज आ गए, ठीक है। अब निकाल नहीं सकते उसको। देखो कैसे निकालोगे एटीएम, 1 रुपए डालना पड़ेगा उसमें, फिर निकाल लो। बस ये समझ लो उसको, है ना। वो जो आपका 1 रुपया है ना दोस्तों, उसको 100% डाल दो, बस। अब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, उतना जल्दी हो जाएगा। आप समझ लो इसको, है ना। तो इसीलिए हर तरह के लोग सफल हैं इस बिजनेस में, हर तरह के लोग जिनके उन्होंने नाम लिए रिटायरमेंट वाले, वो सब अलग अलग हैं बिल्कुल। कांति गाला बिल्कुल अलग, उनका फील्ड ही अलग है। कुलिन देसाई बिल्कुल ही अलग हो, तीर्थंकर दत्ता उनका बैकग्राउंड ही अलग हो गया बिल्कुल ही, है ना। ऐसे जिनके भी उन्होंने नाम लिए, सुगीता अजमानी को देखो, है ना। ऐसे ही आप लोग हो दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, कितना अच्छा होगा कि आप लोग जब अचीव कर रहे होंगे और फिर आपको स्टेज मिल रही होगी और तब आप बोल रहे होंगे, तो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं। आप सोच के देखो कितने, आप कौन जानता है आपको, आपकी अपलाइन जानती है और थोड़ा बहुत जो हम लोग, क्योंकि मॉर्निंग मेरेकल में आता है इसलिए जान, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई इतने ही लोग जानने चाहिए आपको? कुमार को कौन लोग जानते हैं? इवन हम लोग तो भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो एमवे की दुनिया में शायद ही कोई लीडर ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, है ना। तो आप लोग भी उस लायक हैं दोस्तों, इसीलिए कर लेते हैं। क्योंकि ये तो फिर बुके है पूरा, बुके होता है ना, 10 फूलों का बुके बना दिया, 25 फूलों का बुके बना दिया, तो पूरे मिलेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक मिलेगा, है ना।
तो ये यहाँ पर है। कोई एक चीज ऐसी जो इमोशनल आपका हो, है ना, और इमोशनल सेकंड लेवल का। एक तो इमोशनल होता है कि हाँ यार मेरे को चाहिए, मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मेरे आंसू आते हैं। लेकिन इमोशनल ऐसा होना चाहिए कि फिर मेरे को रोज याद रहे कि मेरे को कुछ करना है इस बिजनेस के लिए। ये है असली चीज, है ना। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, वट एवर इट टेक्स, तब होती है चीज। और फिर ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आपको कि बस अब आज मैंने भी बोल दिया और आज आप लोगों ने भी समझ लिया और बस आज से तो अब घर में मैं बोल दूंगा कि बस अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और अब मेरे को यही नहीं करना यार, नहीं करना। थोड़ा 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 उसको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है ना। पहला नियम ही है कि उसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है जो पहले से कर रहे हो। ये भी गलती करते हैं लोग, है ना, कि लग गए ढंग से 6 महीने तो ऐसे लग गए कि बिल्कुल पागल। लोगों ने बोला अरे यार ये तो बस कुछ करके ही छोड़ेगा, उसके बाद फिर 2 साल गायब हो गए। नहीं, हल्के हल्के करके, हल्के हल्के। सक्सेस इज ऑलवेज इंच बाय इंच, सक्सेस इज ऑलवेज इंच बाय इंच। क्योंकि समय जो ज्यादा मिलेगा ना दोस्तों, पैसों से मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखें, समय मिलेगा पैसों से। तो जैसे जैसे पैसे आपको दिखने लग जाएंगे, जैसे जैसे पैसे आने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप फुल टाइम भी हो जाओगे। तो मजेदार बिजनेस है दोस्तों, हम तो एंजॉय कर रहे हैं फ्रूट। आपको तो हम लोग सपने दिखा रहे हैं, है ना, हम लोग तो जी रहे हैं वो वाली जिंदगी। और बस अब जो वो संकल्प है ना दोस्तों, उसको पूरा करने का टाइम आ गया। तो मैं सबको बोलूंगा, आप सबको जहां जहां पर भी आप लोग हैं, जहां भी फेस टू फेस हो रहा है, आप बिल्कुल जाइए वहां पर, है ना। मतलब अभी ऐसे भी लीडर्स हैं दोस्तों जिनके यहाँ 3 तारीख को हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली जा रहे हैं 1 तारीख को, सोचो। 3 को उनके शहर में होना है, बट वो बोल रहे नहीं नहीं सर दिल्ली जाएंगे, अपना सब क्या दिक्कत है, जब जिंदगी बदलनी है हमने। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब उठ के दिल्ली आ जाओ, है ना। कुमार की स्टाइल यही है, वो बोल भी देते हैं लेकिन वो साथ में ये भी बोलते हैं। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे बेवकूफ फॉलोवर नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई मेरे पांव छुए, मेरे को नहीं चाहिए कोई मेरे को बोले सर आपके कारण से मेरी। अरे यार मेरे से भी स्मार्ट बनो ना, शार्प बनो यार, शार्प बनो। यूज द सिस्टम एंड बिकम डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। कहाँ चक्कर में पड़ना है यार इस चीज के कि मेरे को मेरे नाम लो, मेरे को पूछो मेरे। अरे कुछ नहीं, करो, बढ़ जाओ आगे, कर दो कुछ बड़ा, तभी खुश होंगे हम लोग भी। है ना, हम दिलवाएंगे आपको। देखो स्टेजेस, बहुत चीजें सोचता हूँ दोस्तों। बस वही वाली बात है कि वहां पर पहुंचने के लिए आपके अंदर वो कैलिबर आपको लाना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है दोस्तों, टीम वर्क है, अपनी अपलाइन के साथ काम करो। डोंट वेस्ट टाइम, एक एक दिन कीमती है। यदि आज समझ में आ गया तो बस खत्म, फिनिश। So wish you all the best. Me and Bhavna are always with you, and we want all of you to succeed in at least this fiscal year जो आने वाला है. So thank you Rekha ji, Dr. Nalin, everyone. Have a great day. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टीचिंग। और बिल्कुल ये टीचिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको अप्लाई भी करेंगे हम अपने बिजनेस में। और विद दिस हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस दिन को प्रोडक्टिव डे बनाते हैं, राइट। तो मैं आप सभी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट देती हूँ to just send the message to the universe कि I'm the best। तो हम सब मिलके बोलते हैं I'm the best। I'm the best। I'm the best। Thank you so very much। आप सभी का दिन शुभ हो, प्रोडक्टिव हो।